Okay. Okay. Good evening, ma'am. I am Pooja S. Eser, and I am a BCom honors graduate from University of Delhi, currently working in Amazon, and also the co-founder of my own startup, Train to Teach. I believe that a human is a lifelong learner, and I want to learn and implement my teachings and my learnings to be a global marketing leader. Well, that's great. Okay. So, I mean, what's your plan B if marketing does not work out for you? Ma'am, I believe marketing is so inherently inculcated in my being, in my mind and soul, that I would find activities that would eventually lead me up to marketing. So as of now, my plan B is that I'm currently working with the Alt Uni and Hindustan Unilever to learn digital marketing. I will also get an opportunity to work on a live program and a live project with them, which may turn into a job later. So I will pursue my marketing path thereon and also look at different B schools if ISB does not work for me. That's great. Okay. Could you tell me something about your job profile? What do you do at work? Ma'am, currently I am the team leader. I am managing a team of 17 people, and we are working in the US geography to streamline addresses and processes around geographical regions and address lines of the United States of America. Oh, that's great. So, all right, Pooja, tell me something about your maybe strengths first, and then we'll walk on to the weaknesses. Okay, ma'am. I would, having introspected my strengths a lot, I have narrowed it down to three spectrums. First is, I believe, my relationship management. I'm good with my colleagues, with my friends, and my relationships. I believe in giving freedom to all and enough space. So I believe I can manage my relationships well. The second is self-management. This also I developed, introspected, and got to know through experience. I was able to handle Youth Power Hackathon 2021 and my studies along with my job, and all of them turned out great. And well, the third will be self-awareness. Even though I'm working on it, I believe it's my strength to know both my strengths and weaknesses and introspect every decision I make so that the next can be better. All right. Okay, tell me, what do you think, according to you, could be anything, are the two top qualities that any and every leader should possess? Ma'am, I believe empathy and transparency. Because when you're working in a team, you have to be empathetic towards conditions and situations, not only towards your stakeholders or your colleagues, but to the society on a whole. And the second is transparency, because I believe decisions can't be taken if they are clouded with judgment. All right. So, Fair enough. What would you say has been your greatest failure in life, and how did you learn anything that's contributed from that towards your professional life? Ma'am, I think my failure was not an event, but it was more of a emotion that went on for a very long time, because I was not able to find myself, and I thought that everybody has everything figured out at 22, when I'm still figuring myself out. I'm still introspecting, and I don't know what I want, and I thought it was my failure. Rather, later I realized that you don't figure out anything in life, because there is so much to learn, there is so much to explore. So figuring out something is I think it's more of an ideal situation, and I think I've overcome it, because now, as I believe a person is a lifelong learner, I am willing to learn from every experience that comes my way and say yes to every opportunity. All right. So now that you have been a part of the Amazon family, what do you think are some areas where they could make some improvements? Just uh, changes. okay, ma'am. I will be speaking through experience, because Amazon is a very, very big conglomerate. But from my experience, I believe there is lack of transparency with the leadership while it comes to decision making. And the second that they could change is frequent interactions with their subordinates or with their superiors. Sometimes we are so engrossed in work that we forget to communicate, and being in this virtual environment, it's a So, necessity. Pooja, I have a question for you. In your ISB essay, you had mentioned that you want to go for your PGP program because this will be a pathway so that you could switch to marketing full time as a profession, because right now this is not your domain. So why haven't you? I mean, didn't you try to switch your roles within the company that you're working? Didn't you have that opportunity to switch from one department to another? It's been 2 years that you've been working in Amazon. You mentioned that you were in a team lead position. So didn't that happen?
Ma'am, I tried my best, but whenever I got to the interview stage, they required certain amounts of, they required certain skill sets, which I did not possess at the point. And they said transferring me, because I was being considered for the team leader role, they said, you will be incubated as a normal auditor if you tell us that if you could deliver on your skill. And then I realized, if I have to build my skill set, then why not start from the foundation? Hence, I thought of pursuing an MBA to learn well, crisis management and risk management as well, and learn about a discipline from all perspectives, and then find my niche in it. Right. And you've been very big on the concept of green marketing and sustainable SDGs. You worked on some as well. You've particularly mentioned that you would like to work for companies that are actually practicing ethical modes of business. So what do you have to say about Amazon? Because in a recent discussion, we found out that, there is always a debate going on whether Amazon is actually going green or it's pretending. So what do you have to say on the actual work that is going on? Well, ma'am, I speak from my experience as a consumer, not as part of the company. I believe Amazon is part of greenwashing, so to say. They have a lot of opportunities to make themselves more green, more sustainable, and I believe they should be working on it. All right. Ashmita, you may continue. Yeah, Pooja. So since, marketing is the domain that you want to get into and you're interested in that, I'll just give you a very simple scenario and I'd just like some inputs from you, all right? Sure. Okay, so let's assume that you're a grocery store owner and obviously there's a COVID-19 outbreak. And how would you, what marketing skills or strategies would you use as the owner of a grocery store to just provide better services to the people? The online switch has already happened. Anything else that you could suggest? Okay, ma'am, kindly allow me 30 seconds to collect my thoughts and I'll get back to you. Sure. Okay, ma'am, may I start, ma'am? Yeah, sure, definitely. I'm listening. Ma'am, I would employ the strategies of 7-Eleven. I was perusing a case study by 7-Eleven, wherein in Japan, they started micro-assessing consumer behavior. So there is a very beautiful case study wherein they were, a village was going on a picnic. The whole village was going on a picnic, and they realized that villagers, it was an annual outing. And they realized that before going for that picnic, everybody had a certain number of vegetable items or any other particulars that they required for their outing. They used to buy it from the grocery store. And I believe it is a beautiful concept to implement. Indians are very particular on the grocery stores where they buy, and they believe in long-lasting relationships. So I, being a manager of a grocery store, I would like to assess those small habits or those small stimuli which encourages consumers to buy a product and then facilitate them. All right, that's great. I'd just like to add one more twist. Now, let's say the government announces a lockdown tonight and people start hoarding up outside your store. They want to hoard up the goods, whatever services that you're providing. But if that is the case, if that happens, then everything that's in your store, all the rice, all the other departmental store products, they all go out of stock. And that is something that you cannot let happen. What would you do? Ma'am, I will bring in the concept of rationing. I think, also drawing from my experience, I believe Instamart, Swiggy, and Blinkit Grofers, they have a concept of rationing wherein they don't let you buy more than a certain amount of product. So I believe if for necessities, because everybody will be requiring them, I'll ration it in a way, considering, well, there would be less to consider because I would not know the people who will be coming to hoard the stuff. But finding out an optimum number which should be given out and ration it accordingly. All right, fair enough. Could you maybe name 3 CEOs who are, product managers who inspire you?
All right. So I would like to improvise the question. How about we ask if there are any global marketing managers or professionals that you know who have been a product of ISB in the past? Well, I follow Ankur Warikoo a lot. I believe he's an entrepreneur who's doing it all. I And think so. Yeah. may Yeah. I continue? Yeah. Go on. And I believe the teachings that he has and the linking that he has on his Instagrams at every Friday at 10. I think that it's an amazing way to communicate with your consumers, with your potential clients. So Ankur Warikoo tops my list there. All right, Pooja, can you tell us why maybe, we should not select you? Any reason why you would believe so? Yes, ma'am. Though I bring this synthesis of Western efficiency and Eastern values with me, but if there is a better candidate than me who's a much better fit to ISB, and there is a greater two-way interaction between the institute and the person, I believe he should hold the seat based on his That's merit. very, very modest of you. All right. Yeah, I think I'll just hand that over to Sanjam now. Yes. Pooja, so what are your expectations from ISB, and what kind of learnings you want to have after joining the PGP program? Well, ma'am, I'll start with another experience of mine. I was part of Catalyst 2030 incubator, and today in the meeting only we were told that the SDGs that we are planning to excuse me, ma'am. The SDGs that we are planning to achieve by 2030 will not be achieved by 2092 at the pace that we are going. And our world, the markets and the products are moving towards a crisis because they have to strive for sustainability and greener products if they want to protect the earth. From ISB, I wish to learn crisis management because I believe that is a skill that every leader should have. Alongside, I would like to increase my risk appetite as well. It is said that if you have enough information and if you have the power to interpret the knowledge or the text that's in front of you, you take better decisions, you take faster decisions, which are seldom wrong. So I believe these two traits or skills are something that I want to pick up at ISB. All right. So, Pooja, with this question, I have two follow-up questions for you. First one being definitely, as you mentioned, that you would want to learn the art of crisis management. Has there ever been a history of crisis management failure during your workplace by you? And if you can recall an incident, yes, I'd like to hear that. Crisis management. It was crisis management. We had a 2.5 level severity, which is a very, very massive severity in Amazon, because there was certain data that was internally leaked within the teams. I was not particularly part of it, so I won't have an experience to share with you as of how I managed. But yeah, this is a crisis that I came across. And I'll rephrase my question. I'll put it again. Has there ever been an incident that you can recall at the moment where you failed to manage the crisis, a crisis management failure that happened by you? Ma'am, shall I put it in personal or professional? Professional domain, only in work experience, professional domain. Ma'am, I have been lucky that ways. I have been. You can go ahead with your personal experience. You can go ahead with the personal experience in that case. I was assisting my father in his custom house agent business, and Havels was ready to withdraw its account from us, and because of a mistake that our teammates committed while auditing their data. So I believe therein we were able to hold them. We were able to deliver different checklists, different checkpoints, and then increase our communication and our efficiency while working with them, and we were able to retain that account. So I believe that was a crisis management where it was successfully handled. Kudos to my father also, because he was spearheading it. No, Pooja, my question was not a success story. I'm talking about a failure story where you failed to manage that situation in a time of crisis. I'm talking about a failure. Ma'am,
I have never come across a situation or crisis that is directly pinned down on me, and I have not been able to deliver it. I'm sorry, but I won't be able to. All right. So I'll go back to my other question in that case. When I had asked you that why couldn't you switch from your current portfolio in your current organization to the marketing's role, you mentioned that you lacked certain skill sets at that moment. They had denied you because you did not have certain skill sets to switch into that field. But when I asked you what are your expectations from ISB, there was no mention of those skill sets that you'd like to learn that would particularly help you become a good marketing professional. It was more towards a critical, crisis management situation. Of course, you were vocal about those other skill sets, soft skills, but not anything that would turn you, not hard skills that would turn you into a better marketing professional. Why is it so? Ma'am, I believe the course that I'm currently undergoing, digital marketing, will be my niche. But for my niche to have a very strong structure, I need to have a very strong foundation. I don't believe a foundation, as you grow into a leader, you don't go into marketing specific knowledge as a leader. You would have to have different perspectives, and you have to look at it from different domains, be it operations, be it IT, be it finance. So considering that I won't consider going to ISB just to pursue marketing. I want to learn it all, imbibe it all, and then implement my skills in marketing. All right. So Pooja, before concluding the session, I would again like to ask an introduction of yours. And if you could also highlight one point that is not mentioned in your entire application or your resume. It should not be there in your entire application process. Okay, ma'am. Then I'll share a very personal anecdote. Currently, very in the recent past, my loved one, my grandmother, passed away. And it made me realize that life is too short not to follow your passions, and it is too long to take small steps and bring about a big change. So that is what I personally feel, and I don't think I have ever mentioned it or said it out loud. But I believe ISB will be an amazing opportunity for me to bring about these changes. Do you have any questions that you would want to ask us? Yes, ma'am. Considering you've been alums of ISB and have been working, what are the teachings that have helped you, that you picked up in ISB, inculcated or honed, which have helped you in implementing your work, helped you in various domains of your career? All right, so that will be all, Pooja. That is on this question we'll be concluding. The last question was particularly asked because ISB gives you an option to ask that question as well. I think that being said, Ashmita and I are pretty much done here. Sagasa, would you like to share any inputs? I'd just like to add one more thing to the situation that I gave. At the end, when I talked about the lockdown, maybe you could mention about assuring the consumers as well. Because at the time of a lockdown, there's a lot of panic amongst the consumers. So as a producer, as a supplier, it becomes your job to assure them that you would be providing them the products tomorrow as well. Okay. That's about it. First of all, really great and enriching listening to all of you, especially Ashmita and Sanjam. The kind of questionnaire it was, it was totally bang on. And Pooja, बहुत अच्छे से आपने जवाब भी दिया. Pooja, simple mathematics है. SPJMR और ISB में आपके chances ISB के साथ ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ISB आपको 900 सीट्स के लिए आपको स्क्रूटनाइज करने वाला है, ग्रिल करने वाला है. SPJMR के पास उतने नंबर्स नहीं थे. Probably like 1/3 भी नहीं थे. सारे एलम्स आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं. वो लोग फेयरली यंग रहेंगे, आपके एज के तो नहीं रहेंगे, पर हाँ वो कोई 40+ रेयरली ही होगा. They all will be in between 35 to 40. एक स्क्रीन और रहेगी, तीसरा विंडो, जिसमें वो स्क्रीन बंद रहेगी. वो ऑफिशियल्स होते हैं ISB के. वो कोई भी बातें नहीं करेंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ एलम्स बातें करेंगे.
99.9% एलम्स यूएस के ही होंगे, इंडियंस होंगे, लेकिन जो यूएस के लिए काम करते हैं यूएस में ही होंगे. Probably like 90% and 10% they must be from India, but then yes, 90% they are from outside India, though they are Indian. पूरी जो क्वेश्चनर होगा उसमें बार बार पूछा जाएगा कि why you want to pursue MBA, घुमा फिरा के. इसका सीधे तौर पे उदाहरण ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह कितने बजे उठे, आप एक जवाब दोगे. आपने ब्रेकफास्ट कितने बजे उठ किया, आप एक जवाब दोगे. ब्रेकफास्ट उठने के कितने घंटे बाद ब्रेकफास्ट किया, आप एक जवाब दोगे. ये तीनों जवाबों का रिलेशन होना ही चाहिए. कंसिस्टेंसी. ओके सर. हाँ, क्योंकि साइकोमेट्रिक क्वेश्चनेयर रहेंगे जिसमें आपको टैप इन किया जाएगा. स्ट्रेंथ और वीकनेस कीवर्ड्स सिनोनिम्स में चेंज हो जाएंगे और आपको बहुत तरीकों से आपके जो आपका पैरेंट रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स क्वेश्चन वो एक्सट्रैक्ट कराने की कोशिश करेंगे. बीच में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप किस इंडस्ट्री को परस्यू करना चाहते हैं. There are times when we should not be very critical and there are times when we want to make them believe कि जिस पर्पस से आपने ISB खोला वो फुलफिल कर रहा हूं. तो अब हम थोड़ी ISB की हिस्ट्री जान लेते हैं. एक समय हिंदुस्तान में ऐसा था जब IIM बैंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता जो तीनों ट्रेडिशनल IIMs थे उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस बन गया था. सिर्फ आपने ये सब इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि ये जो तीनों कॉलेजेस हैं ये अपने ब्रांड को और अपने लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं. 10 साल बाद भी इनका कोई जूनियर इनके पास जाएगा, ये उसको रेफर करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे. और जो कि ये क्वालिटी पे वर्क करता है ना कि क्वांटिटी पे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे भारत की आबादी जब 100 करोड़ से 120 करोड़ या 130 और आज जब 142 CR पे हैं, फिर भी सीट्स बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा था बिकॉज क्वालिटी. एक समय हिंदुस्तान में ऐसा आया कि हिंदुस्तान की क्वालिटी डेफिशिट कर गई इसलिए क्योंकि 1992 में नेहरू डॉक्ट्राइन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, FDI इंडिया में इनकल्टेट कर गया और उसके बाद जो बिना अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज को बिना ₹1 लगाए सिर्फ ऑफर्स थ्रो करने थे और इंडियंस भाग भाग के जा रहे थे. इंडियन कंपनीज प्लस जो कंपनियां वेस्ट की इंडिया में हैं उनको ऑपरेट करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था. ISB came into the picture by Honorable former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee inaugurated it. Okay. And ये साउथ कमांड स्ट्रक्चर जो कि हैदराबाद में है और ISB को बनाने वाले लोग वो हैं, अब मैं बताने जा रहा हूं, वो है E&Y, एक्सेंचर, PwC. तो ISB में पैसे जिनके लगे हैं वो खुद कॉर्पोरेट कंपनियां हैं और इसीलिए ये कॉर्पोरेट कंपनियां ISB को IIM अहमदाबाद के बराबर या कई पैमानों पे उससे बेहतर कर दिया. तुम ये भी पॉइंट बोल सकते हो कि IIM अहमदाबाद भले वर्ल्ड का बेस्ट, इंडिया का बेस्ट हो, लेकिन इमर्शन प्रोग्राम ISB के ज्यादा अच्छे. ISB के पास इमर्शन प्रोग्राम का ज्यादा एडवांटेज और ISB अपने कंसल्टिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है. FT रैंकिंग हो चाहे और कोई भी रैंकिंग हो, वो ISB को बहुत ऊपर रखता है सिवाय NIRF रैंकिंग, क्योंकि NIRF रैंकिंग जो है वो गवर्नमेंट का दिया हुआ है और गवर्नमेंट ये कहता है कि हम जब तक डिग्री नहीं बोलेंगे तब तक आप रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. वर्ल्ड रिकॉग्निशन ISB का बहुत स्ट्रांग है. बिग 4 और टॉप 3, बिग 4 E&Y, KPMG, डेलॉयट, PwC, ये सब बहुत स्ट्रांग है, रिक्रूटर्स हैं. Bain and Company, Boston Group, Berkshire Hathaway, they are also one of the major recruiters.
एक और हैक है आईएसबी का जिसको तुम अपने एडवांटेज में बता सकते हो, why it is going to be supreme in terms of India is कि ISB का प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट ड्रिवन नहीं है। इससे ISB के प्लेसमेंट को एक स्टेबिलिटी मिलती है। सपोज हम 4 लोग हैं और इस साल के लिए हम स्टूडेंट हैं, आई एम अहमदाबाद में, और इस साल के लिए पूजा एस इसार को हमारा प्रेसिडेंट चुन लिया गया, तो अगले साल या 2 साल बाद पूजा इसार चली जाएगी और जो नया इलेक्शन आएगा, इलेक्शन होगा और उसके बाद जो बनेगा उसका एक्सपीरियंस डे 1 से शुरू होगा। लेकिन जब हम स्टूडेंट ड्रिवन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन उसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन ISB इज टोटली कंट्रोल्ड बाय देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर पीपल। सम ब्राउनी एंड गुड पॉइंट जो मेंशन नहीं कर जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो इन अ बेटर वे। ISB के हॉस्टल्स में आपको 5 स्टार सुविधाएं मिलती हैं। मतलब जब आप क्लास से आएंगे तो आपका पूरा कमरा, इवन बेड, जैसे 5 स्टार रूम में, 5 स्टार होटल्स में होता है। ISB के साथ पास बजट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ISB 40 लाख लेता है, IIM अहमदाबाद 30 लेता है, IIM बैंगलोर 22 लेता है, IIM कलकत्ता 23-24 लेता है। और ISB एक ऐसा प्रोग्राम है जो जेन्युइनली मैनेजमेंट को बहुत कैप्सूल फॉर्म में रखता है, इसलिए वो 1 साल का प्रोग्राम है। और एक्चुअली इट्स नॉट काइंड ऑफ अ कॉलेज, इट्स अ मिक्स ऑफ कॉलेज एंड द कॉर्पोरेट लाइफ। सो यू विल, anybody who eventually wants to be on the top has to go through a fire fighting. ISB जानबूझ के 3 महीने वो फायर फाइटिंग करवाता है, पर्पसली। ओके, सो ISB को फाउंड करने वाले जो लोग थे, वो अमेरिका के थे, वो आए थे, आई एम स्टिल नॉट वो नेम, एंड अंकुर वारुकू को करना, अंकुर वारुकू ठीक है, ही इज गुड, डू एपिक शिट, उनकी किताब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारी चीजें, बट देन यू हैव टू गो डीप डाउन। ISB के वो लोग निकालिए और उसको एक फेक स्टोरी बनाइए या कोई अपना एक एक्सपीरियंस बनाइए जिसमें आप उनके साथ डेफिनेटली आप उनको बता रहे हो, मतलब उनके साथ आपका कन्वर्सेशन हुआ, बीट इन फ्लाइट और कहीं ऐसे, और वो बहुत इंस्पायरिंग लगा हो आपको। ऑल्सो ISB इज ए फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम, लेकिन और भी बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम हैं, तो वो ज्यादा पॉइंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी एज ज्यादा नहीं है, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत एडुकेट है, तुम 900 सीट्स पे फाइट करोगे, your chances is, I think, I will not say 100% just to make sure कि तुम, मतलब तुम्हारा ईगो बूस्ट या ये सब ना हो, लेकिन हाँ तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपना स्माइलिंग फेस मेंटेन रखा तुमने इस बार, वो कंटिन्यू करना तुमने, और कभी भी ये मत सोचना कि कोई जवाब तुम्हें नहीं आ रहा है तो हेजिटेट मत होना। कोई भी जवाब ऐसे होंगे ही नहीं जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओ। फ्रेम जो कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो स्क्रिप्टेड हो। Furthermore, I covered the budget part, I covered the ranking part, I covered the recruiter part. Consulting is the benchmark, the main photo of ISB, and तुम्हारा ऑफर, संजय, what is the preference selection? I'll get back to you, संजय, मैं आपसे बात करूंगा, होल्ड, कोई बात नहीं, मैं आपसे इस कॉल के बाद बात करूंगा। इनके फॉर्म का मेरे को एक सिनेप्सिस चाहिए ISB का, और कब इंटरव्यू कब है? ठीक है, we'll fix it tomorrow because this is the threshold of universities in India, which is ISB, and definitely रही बात तुम्हारे GMAT की, तो तुम कई बार नोटिस करोगे कि जितने बड़े स्कूल्स में हम पहुंचते हैं ना, उसमें GMAT के ऊपर बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड फेयरली गुड, probably 700, near to 700, 690, it's kind of 7, हाँ 690। तो खुद मत बताना, क्योंकि
तुम्हारे से बेहतर और तुम्हारे जैसे उनके पास कम से कम नहीं तो 10,000 हैं। तो उससे वो ये निकाल लेंगे अंदाजा कि तुम बूस्ट कर रहे हो, और जितने भी तुम्हारे पुराने जवाब थे वो भी जब तक जीमैट टच नहीं किया जाए स्कोर, तुम मत बताना। अगर पूछे तो पूछे तो डेफिनेटली सर, माइन वाज फेयरली ऑन डाउन साइड दो 690, बट देन यस आई मीन आई हैवंट, मैंने जीमैट का स्कोर को छोड़कर नहीं लाया 690। मैं अपना जॉब कंटिन्यू की हूँ, मैं अपने कजन्स के वेडिंग में गई हूँ, मैंने कोई नेटफ्लिक्स का कोई सोप जो मेरे को पसंद था वो सेक्रीफाइस नहीं किया है। मेरे दोस्तों को कभी ये शिकायत नहीं हुई कि ये तो तैयारी कर रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो जो कहते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोना सिर्फ नेगेटिविटी पड़ना पड़ता है, ना कि लोग और अपने रिलेशनशिप्स। ओके, ठीक है। और मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जेन्युइन एलुमनाइज का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है वो एलुमनाई बहुत पॉपुलर हो, अपने डोमेन का मास्टर हो, और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उनको आईएसबी का गवर्नमेंट के तरफ कौन कौन से लोग काम किए हैं या स्पेशल प्रोजेक्ट्स में लोग काम किए हैं, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटरल एंट्री ऑफिशियली तो अब शुरू किया है, लेकिन पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी किसी टैलेंटेड इंसान को देखती थी उनको एक्वायर करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, शशि थरूर, अमूल जो है, उनके कोरियन साहब, भाभा एटॉमिक सेंटर भाभा, उसके बाद भाभा जी, उसके बाद जितने भी और लोग हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो मिल्क रेवोल्यूशन हो, चाहे वो ये अपने सैम पटरोड़ा, जिनकी वजह से हमारे पास आईटी रेवोल्यूशन आया राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट में, ये लोग हैंड पिक्ड है। इवन इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाइदर ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, नाइदर ही वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, दे ऑल वर हैंड पिक्ड। Even Dr. APJ Abdul Kalam was not an IAS officer, but eventually they, तो इसका ये मतलब है कि कोई मेरे को जो लगता है, ये भी जॉब तुम ऐड कर सकते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक टाइम पर when I will be attaining my financial freedom, I will desperately and definitely going to respond towards the problem statement of not mine, of a community, nor a state, of the country. एज ए देश हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है। तुम ये बिल्कुल देख सकती हो कि आई आई एम ए काइंड ऑफ ए पर्सन जो कि अब ये डिस्टिंग्विश सीख गया है कि ब्रांचेस, अगर मैं एक वृक्ष हूं, एक पेड़ हूं, तो ब्रांचेस जैसे ही उगते हैं पूरे दुनिया को दिखते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, टीचर्स, और उन पे तुरंत हमें तालियां मिलती हैं। वन न्यू ब्रांच, इमीडिएटली अ राउंड ऑफ अप्लॉज। लेकिन रूट्स किसी को नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ हमें पता होते हैं। आई एम ए काइंड ऑफ ए पर्सन जो कि दूसरे उसमें बिलीव करता है। सर और मैडम विद ड्यू डिग्निटरीज, वो तुम्हें सर मैडम मत बोलना, वो बुरा मान जाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम हाई एंड टॉप कॉर्पोरेट लोग। तुम बोलना आई एम ए काइंड ऑफ ए पर्सन जो कि कंधे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करती है। बुक्स, सब्सक्रिप्शंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, उसके अलावा कंधे से ऊपर यू मेन टू यू गेट इन ना, इट इज ऑल नॉलेजेबल चीजें तुम प्रेफर करते हो, ठीक है। उसके अलावा एक अपना एक वो वाला साइड भी दिखाना जिसमें वो तुम्हें एक आउट गोइंग पर्सनैलिटी, इन द सेंस कि तुम कोहर्ट के साथ जेल्ड अप हो जाओ। सो योर आंसर शुड आल्सो बी आउटलाइन योर पर्सनैलिटी, जिसमें तुम ये भी मेंशन करो कि यू लाइक स्पीकिंग, बिकॉज एमबीए तो एक बहुत बात की चीज है। द फर्स्ट स्टेट इज कि लोगों को बात करना पसंद होना चाहिए। एमबीए और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर एमबीए शेक्सपियर की नॉवेल है तो कम्युनिकेशन इज ABCDEFGH। okay. So I think that you will fit in their bracket, and before ending this call, one small मतलब एक case study
कि हम लोगों को लगता है कि कॉफी जब हमें पीना होता है कि हम सीसीडी या कैफे कॉफी डे चले जाएं या स्टारबक्स चले जाएं, इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग. नो, दे बोथ आर ऑन अ मिशन विद अ डिफरेंट टेक्सचर एंड टेम्परामेंट. उनके तरीके और तेवर दोनों अलग. कैफे कॉफी डे का जो एक स्लोगन है, a lot can happen over a cup of coffee, उसका सबसे सीधे तौर पे उसका इंडिकेशन है कि दे वांट यू टू कम इन ग्रुप्स, और आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप आइए. और उसका कारण ये भी है कि जैसे आप बैठेंगे सीसीडी में, 10 मिनट के अंदर एक वेटर आपके पास आकर बोलेगा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग मैम टू ऑर्डर. स्टारबक्स में कोई 10 मिनट के बाद नहीं आने वाला. स्टारबक्स की टेबल भी के साइजेस भी बहुत छोटे हैं. एक्चुअली स्टारबक्स एक प्रकार का एक वर्क स्टेशन है. इमोशन अगर हम समझ जाएंगे किसी भी प्रणाली का, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. सीसीडी एक ग्रुप एक्टिविटी कराता है. स्टारबक्स बहुत कॉस्टलियर है. इट कम्स ऑन अ वेरी हाई टिकट साइज, बट इट सर्व्स इट्स एजेंडा. Starbucks is the midpoint in between your home and your office. Home away from home, I've written that only. Yeah. So that's all, Pooja. If you have any questions, ठीक है. मैं ISB का इंटरव्यू फेस भी किया हूँ, and I'm through with it. But though I still chose I'm Ahmedabad, but then I strongly feel कि in some aspects जहां पर एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स को ना करते हुए जो ऑनगोइंग रिकर्सिव मेथड्स हैं, जो कि टेस्टेड है, ट्रायल्ड हैं, और उनको इमीडिएटली स्पूनिंग लेना है, देन इट्स ISB डेफिनेटली. इफ समबडी वांट्स टू गो डीप डाउन, लाइक मरीना ट्रेंच जाना है किसी को कॉर्पोरेट के, ISB इज द थिंग. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Sir, I wanted to know how is ISB's marketing program? Though it is known for everything, but how is it? एवरीथिंग, इसका सब कुछ अच्छा है पूजा. हमेशा याद रखना, ISB में पैसे जो लगे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं लगे हैं. नेहरू जी ने अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता बनाया. बैंगलोर इंदिरा जी ने बनाया, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं. लेकिन ISB कंपनियों ने बनाया है. वो कंपनियां जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडियन मार्केट में, क्योंकि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता वालों की नाक बहुत ऊंची हो गई थी. उसलिए ISB को मार्केट के डिमांड को देखते हुए उसको सप्लाई करने के लिए ISB का गठन किया गया है. Okay, sir. So definitely you will fit, you will definitely, because you are already in a company which is a major recruiter वहां पर. So they will not hesitate, या वो इस चीज में डिस्कस करेंगे कि पता नहीं how would you like, कैसे होगा, क्या होगा, इस kind of a thing. ठीक है. Okay, sir. And हाँ, sir, ISB के जैसे 2 campuses हैं, एक हैदराबाद, एक मोहाली. equally good. Equally good. Okay. वो इलेक्टिव के ऊपर होता है. इलेक्टिव अगर आपके कुछ प्रोफेसर्स वहां के, तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा. वो इक्वली गुड है, एकदम इक्वली गुड है, कोई डिफरेंस नहीं. बल्कि मोहाली को मैं थोड़ा सा बेटर इसलिए मानता हूँ क्योंकि जिनकी जो दिल्ली के हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा. Okay. हाँ. Okay, sir. And sir, हाँ, बोलो पूछ. SPJMR का मार्केटिंग भी अच्छा माना जाता है. उसका मार्केटिंग बेस्ट माना जाता है. SPJMR. हाँ, उसके वो उसी के लिए फेमस है. लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरेटिव हमारे पास कॉलेजेस नहीं है. इवन 4 अपने सीट्स को भरने के लिए 10,000 एप्लीकेशंस को स्क्रीन करता है. सो तुम ये भी फैक्ट तुम्हारे लिए बहुत अम्यूज हो जाएगा कि ISB की जो कमिटी होती है, प्लेसमेंट कमिटी,
उनको एक कंपनी को हाँ बोलने की फ्रीक्वेंसी में 20 कंपनियों को मना करना पड़ता है, बिकॉज नौकरी तो एक ही जगह करेगा ना. इट्स नॉट ब्लडी चार्टेड अकाउंटेंट थिंग कि आप 20 जगह काम कर सकते हो. हाँ जी, हाँ जी. तो देयर आर पीपल एंड देयर आर, मतलब वो क्राइटेरिया ही वो निकल कर आता है कि वो ऑफिशियल्स वही होते हैं जो ना बोल सके डिप्लोमेटिकली. आप खुद सोचो ना, आप इंडिया के प्राइम में हो, तो हर एक कंपनी, इवन एक छोटी कंपनी भी अगर एक ही बच्चा लेने जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेशन भी उसका आईएसबी में हो गया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा ब्रांड एलिवेशन. यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द मोस्ट प्रीमियम. मतलब जहां पर बेन इन कंपनी भी इंडिया में आएगा तो आईएसबी जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, बेंगलुरु जाएगा. एंड थोड़ा सा ये है कि आईएसबी वाले थोड़ा प्राउडी और इगोइस्टिक नहीं होते. They are like, I mean, totally corporate people. I mean, they will not take some, they are like Germans. I mean, they can be upfront, but they will not take, I mean, they're not like कि बहुत personally ले लेंगे. 5 मिनट बाद they will be. So that's how I mean, the whole, because they usually, this are entitled for the purpose. एक अहमदाबाद के ग्रेड को बहुत जबरदस्ती की बूस्टिंग और इज्जत समाज देने लगता है. और क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉलेज गांव गांव तक लोगों को एक लगता है कि दे आर द नेक्स्ट लेवल पीपल एंड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली व्हेन यू पुट द मैथमेटिक्स करेक्ट, आईएसबी हैज गॉट अ बेटर रैंक. कारण है इसका क्योंकि आईएसबी का जो एवरेज क्राउड है वो ज्यादा नहीं है उनका एज. ठीक है, दैट इज. एंड दूसरी चीज, आईएसबी वर्ल्ड के सिस्टम को फॉलो करता है. वर्ल्ड का सिस्टम ये कहता है कि 1 year MBA इज फार इनफ. ठीक है. ओके सर. हाँ पूजा, और पूछ सकते हो क्वेश्चन प्लीज. ऑल गुड फ्रॉम माय एंड सर. सो टेक केयर पूजा, एंड थैंक यू सो मच अश्मिता एंड संजम. पूजा बस कल भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ समय बिताएं, बिकॉज दिस इज समथिंग वी डू for the betterment of the country, because if you cracked ISB, that will be something, I mean, like, that will be a big joy for each and every one of us, because definitely फिर आने वाली पीढ़ी जब पूजा ऐसे सार लिखेगी तो विकिपीडिया का एक लिंक जरूर खुलेगा. So मैंने अपनी बात कह दी है, तुम समझ सकते हो मेरा क्या कहने का मतलब था. So thank you so much पूजा. God bless you, all the best. Thank you so Take much. care. Thank you Ashmita ma'am. Thank you Sanjam ma'am. Thank you Ashmita. Thank you Sanjam. Take care. Take care everyone. One more thing, Sagar, so sorry. हाँ. Ashmita ma'am और Sanjam ma'am का feedback, if any, what I can do better, change the questions, the answers you were expecting, could they be better? मतलब हाँ, Ashmita and Sanjam, over to you. Ashmita and Sanjam, over to you. No, honestly, Pooja, I was very satisfied with all of the answers. And the one thing that I really liked a lot was that, you inculcated personal experience, with your answers. That shows that, they were not pre-framed answers, but they were your real answers because you've actually gone through them. And I had just one pointer about the situation that I gave. Other than that, all good from my side. Thank you, ma'am. Thank you. So Pooja, everything here is almost covered. I am satisfied with all your answers, but I missed out on the first question and the most important question, that is your introduction. So I think we can connect tomorrow once again, as Sagar sir said that we'll probably be connecting. If not, then I will definitely be connecting with you, maybe after the session over the call or tomorrow, definitely. And that is one thing that I would like to, would want you to go again over that, and I would want to hear that answer once again as well. That's just one thing. Okay. Okay. Take care, Pooja, and definitely, I mean, I'm predicting it. You'll through. So एक दो दिन थोड़ा सा और फोकस के साथ, बट यस, कुछ रटने, कुछ मेमोराइज करने का कोई मतलब नहीं है. बी योरसेल्फ. और हाँ, मैम, दोनों मैम्स का इनपुट ले सकते हो. मैंने तुमको एक साइकी बताई कि हाउ इट गोज, एंड यस, एंड यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग. एंड प्री माइंडसेट कई बार अच्छा होता है, बट कई बार ये होता है कि वो कोहर्ट के साथ हाउ दे आर गोइंग टू जेल अप, बिकॉज कोहर्ट, आई मीन, दे वांट टू क्रिएट अ डाइवर्सिटी. सो यस, सोशल फ्रंट पे थोड़ा सा अगर ज्यादा हम और कंटेंट जोड़ पाएंगे, उस पे भी हम कल चर्चा कर सकते हैं.
Okay. और रही बात Amazon को, हम और डीप डाउन, क्योंकि वो डेफिनेटली दे आर पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, they will be coming strong with this category Amazon वाली, कि आप Amazon में क्या क्या करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन उसके फॉलो अप होंगे. So मेरा वही कहना है कि there are things जब आपको नहीं आए, so I mean just simply say no, and they will take it on a very high spirit, because interview process should be like a frequency, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है. अगर कुछ फ्लैट है ना तो वो डेड है, ठीक है, तो वो फ्लैट नहीं होना चाहिए. Okay. ठीक है. Yeah, Sanjam, you want to say something, I guess. No, I just wanted to. I was just agreeing with you because that's one of the reasons why I asked, why I jumped in and asked those two questions related to Amazon, because yes, even there could be a chance that the alumni of ISB could also be working in the same company as you are. So that could also be one of the possibilities. And if it's so, or even if it's not, there will probably be a lot of questions around your company, around the work that you do. So that is one thing that you should be familiar of, that you should be familiar with those answers. Never ever अपने स्माइलिंग फेस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना. हाँ जी सर. बिल्कुल, यही तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. Yes, हाँ. The age they were be in 35 to 40, I think, and in this age वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत नजदीक होंगे, वो जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, and they will understand एक रिस्पेक्टेबल अप्रोच. यस, बूस्टिंग एंड एवरीथिंग. कोई भी आईएसबी का इंटरव्यू हो रहा है, जो भी है वो ओवर अचीवर है, तभी वो आईएसबी के इंटरव्यू में बैठा है. ठीक है. तो हाँ, जितना मतलब हम लोड, वही एक कहावत है हिंदी की, वृक्ष से लदे हुए फल हमेशा झुके हुए होते हैं. ठीक है. तो बहुत ही एम्पैथी के साथ, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग यू विल मेक इट. I'm very strong high hopes. ठीक है. Thank So you. all the best. Thank you so much, Pooja sir. And thank you so much, Sanjay madam and Ashmita. Great job. Ashmita, वहाँ टाइम क्या हो रहा है लंदन में? So it's 6:21 right now. Okay, okay. So Pooja, आपका अभी just interview, अभी आपका एक multi geographical location से आपका interview हो रहा है. Yes, So sir. you are in Hyderabad, right? Yes, sir. Currently in Hyderabad. Yes, sir. और आपको हैदराबाद ही जाना है. ISB भी हैदराबाद है. Yes, sir. I fell in love with this place. Want to stay here forever. So Hyderabad all the way. Take care, Pooja. Take care. All the best. Thank you so much, sir. Thank you. Good night, everyone. Take care. Thank you. Thank you so much. Take care, Pooja. All the best. Thank you. Good night. Okay, so thank you, Ashmita, and thank you, Sagar sir. You just recording. You can close, please. Okay.